this video lecture series, we will be talking about decentralized procedure. So, this is the content given on the EMA website, European Medicine Agency website, that the procedure for authorizing medicine in more than one European Union member state in parallel. It can be used for medicines that do not need to be authorized via centralized procedure and have not already been authorized in any member state. तो as per this definition हमारे पास क्या क्या चीज़ें इकट्ठा हुई about decentralized procedure, that this is a procedure authorizing medicines in more than one European Union member state parallelly. तो अगर आपकी medicine या drug को you want to authorize in more than one member state, in more than one European Union member state, you can go with this procedure of decentralized procedure. In parallel, they said. In parallel means ऐसा नहीं कि आपने पहले इटली में लगाया, फिर उसके बाद फ्रांस में लगाया, फिर स्पेन में लगाया, ऐसे 27-28 स्टेट्स के लिए आप अलग अलग लगा रहे हो. पैरेलली इकट्ठे एक या एक से अधिक, तो हो सकता है एक से अधिक ही होना चाहिए, मोर देन वन. सो इटली में, फ्रांस में और स्पेन में मैंने ये लगाया, मुझे और कंट्रीज में नहीं लगाना. सो मोर देन वन एंड इट कैन बी एनी मेंबर स्टेट. दिस इज गिवन जस्ट फॉर एग्जाम्पल, नॉट टू बी टेकन लिटरली. देन सेकेंड कंडीशन इन्होंने दी कि इट इज़ यूज फॉर ड्रग्स और मेडिसिन दैट डू नॉट नीड टू बी ऑथराइज बाय सेंट्रल प्रोसीजर. सो इस मार्केटिंग ऑथराइजेशन एप्लीकेशन का स्कोप में नहीं आता है सेंट्रलाइज प्रोसीजर. हमने पढ़ा ना, 3 प्रोसीजर है: म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन प्रोसीजर, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज प्रोसीजर्स. तो जो भी ड्रग या मेडिसिन हम मार्केट करने के लिए ऑथराइजेशन मांग रहे हैं, अप्रूवल मांग रहे हैं, दैट कैन नॉट बी अप्रूव्ड बाय और ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल प्रोसीजर और सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. थर्ड कंडीशन इन्होंने दी कि ये और किसी भी हैव नॉट ऑलरेडी बीन ऑथराइज इन एनी मेंबर स्टेट. सो previously was also not authorized in any of the member state. Why this point is mentioned? Because this is in relation with the mutual mutual recognition process. जब आप म्यूचुअल रिकग्नाइजेशन प्रोसेस पढ़ोगे उसमें आपको समझ में आएगा कि इसमें ऐसा क्यों कहा है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर आस्किंग फॉर द मार्केट ऑथराइजेशन एंड प्रीवियसली इट वाज हैव नॉट ऑलरेडी बीन ऑथराइज्ड बाय एनी मेंबर स्टेट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर ऑथराइजेशन. नाउ द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर इज अ प्रोसीजर फॉर ऑथराइजिंग मेडिसिन इन मोर देन वन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट at the same time. So this parallel means what? At the same time. Now what will happen? The reason we are applying centralized procedure में basically when you opt for centralized procedure, all the 27 EU member state के पास that drug the market authorization is done for all the 27 European Union member state. But in case you do not want this, you can opt for 2 ways. First one is decentralized procedure, which we are discussing right now, and the next one is mutual recognition procedure. In mutual recognition procedure, आपका जो applicant है उसके पास initially एक national approval, किसी भी एक initially by this method the applicant must have national approval in one European Union member state, and this is the so called reference member state. इसको हम क्या बोलेंगे? reference member state, RMS, for the mutually recognized procedure. Then the applicant seeks approval for the products
इन अदर यूरोपियन मेंबर स्टेट्स से अप्रूवल की गुहार करेगा। बट मान लो कि फ्रांस है, वहाँ से मुझे अप्रूवल मिल गया है, वो मेरा रेफरेंस मेंबर स्टेट है। अब मुझे स्पेन या फिर इटली में अप्लाई करना है, तो मैं इसके बेसिस पे इन दो कंट्रीज़ में भी कर सकती हूँ। बट मेरे पास पहले एक इनिशियल अप्रूवल होना चाहिए किसी भी मेंबर स्टेट का, एंड दैट इज़ नोन एज RMPS। DCP में एप्लीकेंट विल अप्रोच ऑल चोजन मेंबर स्टेट्स एट द सेम टाइम। हम एक के पास जाके फिर बाकी दो के पास नहीं जाएंगे। वी विल गो टू ऑल आवर मेंबर स्टेट ऑफ चॉइस एट द सेम टाइम ओनली। और ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ यू आर गोइंग एट द सेम टाइम, we do not have an pre-approved और initially approved authorization हमारे पास मार्केट का नहीं है। अब क्या होगा ये करने के लिए कि हमें सभी हमारे विश के मेंबर स्टेट्स के पास अप्रोच करने के लिए एप्लीकेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे RMS बोले तो रेफरेंस मेंबर स्टेट। तो दे विल आइडेंटिफाई एन RMS, okay, that will assess the submitted market authorization application, वो assess करेगा and provide other selected members with the conclusion and results of the assessment. And this reference member state will actually provide, after assessing the application, they'll provide other member state with the conclusion and results of the assessment. तो टाइम बचा, the other member states को एक एक करके रिव्यू नहीं करना पड़ा, and they'll trust this conclusion and result. That is why the process was set. However, so in principle the applicant can choose any European state as reference member state, but in almost all member states the application need to send a request for a time slot when they will be allowed to submit the application. Depending on the agency selected as RMS, the interval between submission of the request to the actual submission date can be 2 years or longer. तो भले ही इसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है कि असेसमेंट में टाइम बचा, बट क्योंकि हम जैसे मान लो मैंने फ्रांस को रेफरेंस मेंबर स्टेट माना और मैं उनकी पर्टिकुलर नेशनल एजेंसी को अप्लाई कर रही हूँ डायरेक्टली, सो पहले मैं उनसे परमिशन मांगूंगी कि व्हेन कैन आई अप्लाई, आई वांट टू अप्लाई एंड व्हेन कैन आई अप्लाई, and then France regulatory agency will set me a date कि so and so date पे you can submit us the MAA. So they are saying कि the time interval between submission of the request, ये तो आप request कर रहे हो कि हमें submit करना है, and this is the actual submission. सो कहीं ना कहीं इन दो चीज़ों के बीच का जो टाइम डिफरेंस ही है वो समटाइम्स इट इज़ मोर देन 2 years और इक्वल टू और मोर देन 2 years. देयरफॉर प्लानिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर को वेल इन एडवांस और लाइक it is very highly recommended to do the planning for DCP well in advance. So in practice, the applicants are not completely free to decide which procedure is the most relevant. है ना? There are certain products, indication and conditions for which the centralized procedure is mandatory and not all products are eligible for this procedure. तो वही बात जो हमने ऊपर यहाँ पे कही थी उसको डेप्थ में समझें कि it does not depend on me as a pharmaceutical company that I will go with DCP or I will go with MRP, meaning mutual recognition procedure and decentralized procedure or centralized procedure. It depends on what? It depends on my product. It depends on the indications of my product. It depends on other conditions, my target population. All these things
they together forms the basis for which procedure to apply. Sometimes centralized procedure is mandatory to apply and sometimes it's not. So therefore they said कि you can apply via decentralized procedure or MRP procedure only when centralized procedure can't be opted for as an ideal route. It does not depend कि you felt like. So that the ball is not in your hand. The centralized procedure is mandatory for 3 types of product as per the regulations. Medicinal product developed by means of one of the following biotechnological process. ठीक है, पहला तो है कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, और उनमें से भी कुछ प्रोसीजर्स जैसे कि क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, including transform mammalian cells, hydrioma, monoclonal antibody methods. So कुछ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के बेसिस पे आपका ड्रग बना है तो you have to mandatorily opt for centralized procedure. New active substance for which the therapeutic indication is treatment acquired immunodeficiency syndrome, cancer, neurodegenerative disorder, diabetes or autoimmune disease, autoimmune डिसफंक्शन और वायरल डिसीजेस. सो अगर आपका एक्टिव सब्सटेंस जो है ड्रग का दैट इज़ न्यू फर्स्ट ऑफ ऑल, सो न्यू है और it is treating the diseases said just right now. I'm not going to write each and everything, you just have to listen. So if these are the diseases like immunodeficiency syndrome है, autoimmune diseases हैं, generative disorder है, neurodegenerative disorder, तो in that case you have to mandatorily offer centralized procedure. Medicinal products that are designated as orphan medicinal products pursuant to regulation as per their regulations. So अगर आपका orphan drug है then it needs to be regulated, like you have to offer MMA via centralized procedure only so that all 27 EU member states को वो drugs का benefit मिल पाए. So products such as advanced therapy, medicinal products and biosimilar falls under the mandatory scope. So these are the 3 conditions where centralized procedure is mandatory. और इनके अलावा भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट हो कि कोई न्यू एक्टिव सब्सटेंस है या न्यू मेडिसिनल प्रोडक्ट है जिसमें एक सिग्निफिकेंट थेरापेटिक प्रॉपर्टी हो और कोई नया टेक्निकल इन्वेंशन हो जिसके कारण it would benefit the patients at a community level, then also you can opt for centralized procedure. So so this decision whether which MAA application is eligible for what kind of procedure is this decision is made by the European Medicinal Agency. So आप उनको एक corresponding request भेजते हो. Upon the submission of the corresponding request, that is letter of eligibility by the applicant, the EMA decides which route to opt for. So if I were to conclude this much, this actually we talked a little bit about centralized procedure, but that is to show why or when to opt for centralized and when to opt for others, and that is not under your will. So in conclusion, in case that an applicant wants to launch a medicinal product in more than one European Union member state, there are 3 submission procedures. For biotechnology products including monoclonal antibodies as well as ATMPs like gene and cell therapies and certain indications, there is no other way but centralized procedure. Applicants of products with new active substance that fall under the mandatory scope have access to all 3 operations, and the decision on the procedure will be made based on the healthcare standards, reimbursement conditions, timelines and size of the company and target market.